Hello students, today we'll have class on newborn of HIV positive mother. यहाँ मैं HIV या AIDS के बारे में क्लास नहीं लूँगी. You have already read it in medical, surgical nursing and community health nursing. Okay, I'll be just discussing how to care for newborn of HIV positive mother. You already know what is HIV. HIV is the virus that causes AIDS. Okay, AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Okay. So it is always believed that अगर मदर को HIV पॉजिटिव अगर HIV पॉजिटिव है तो बेबी भी HIV पॉजिटिव होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है. इफ़ दे आर टेकिंग प्रॉपर प्री नेटल एंड पोस्ट पार्टम केयर देन चांसेस कम है कि बच्चे को भी HIV हो. लेकिन HIV कैन बी ट्रांसमिटेड टू द फीटस और टू द न्यूबॉर्न during pregnancy or labor or by breastfeeding. Okay, so you can here see transmission from mother to child. Approximately 8,500 women living with HIV give birth annually. Okay, so इसमें pregnancy के through, placenta के through you can see 5 to 10% chance है. Then labor and delivery में due to cervical secretions blood 10 to 20% chances are there for the child to get infected, and through breastfeeding also 10 to 20% chance are there to get infected. Okay, so you already know that body fluid shown to transmit infection to others. Okay, so here also blood, vaginal fluids and breast milk have been shown to transmit infection to the growing fetus or to the newborn. Okay, the common symptoms basically you can see that infant who are infected with HIV often have no symptom for first 2 to 3 months. Okay, one symptom develop, they may show common early symptoms as yeast infection in the mouth, failure to gain weight and grow, swollen lymph nodes, then swollen salivary glands, and last spleen or liver, ear sinus infection, URI, then delay milestone and diarrhea. Okay, so that is the early symptoms seen in HIV positive newborn. But most infants born to HIV positive women in the United States do not become HIV positive because they are maintaining good prenatal and postpartum care. Okay, so if they are maintaining good prenatal postpartum care, we can reduce the infection rate. The common diagnostic test, you already know that every pregnant woman has a routine test of HIV. So if she known to be HIV positive during pregnancy, she has to do some other regular blood test including CD4 count. CD4 count अगर 200 से कम रहेगा तो उसको AIDS रहता है, तो हमें CD4 count भी देखना है मदर का. वायरल लोड टेस्ट देखते हैं in order to check how much HIV is there in the blood, and a test is done in order to see if the virus is responding to the medicines used to treat HIV. Okay, it is called as resistance test. तो ये टेस्ट हम मदर्स में करते हैं. Okay, then there are certain diagnostic tests to be done in babies and infant. So if infant born to HIV positive mother, HIV testing is done at 14 to 21 days after birth. Okay, 14 to 21 days after birth किया जाता है. Then दूसरा किया जाता है 1 to 2 month में, तीसरा 4 to 6 month में. Okay, so if the result of 2 tests is negative, अगर इसमें से कोई भी 2 टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है, the infant does not have an HIV infection. But if the result of any test are positive, the baby has HIV. Okay, and the babies who are at very high risk for HIV infection may be tested at birth itself. ओके, तो उसके लिए हम 14 to 21 डेज़ का वेट नहीं करेंगे. अगर हमें पता है कि इसके चांसेस ज़्यादा है, कुछ भी हो गया, टीयर हो गया है, ब्लड कांटेक्ट में आ गया है, सो देयर यू हैव टू इमीडिएटली टेस्ट द बेबी फॉर द HIV इन्फेक्शन. मैनेजमेंट from the pregnancy itself, HIV positive mother will start her ART treatment. Okay, and she will be taking ART 3 drug regimen. That's the common combination drug that is given to the pregnant woman in order to reduce the transmission. Okay, and if the first positive test is found to be during labor, then she will be receiving ART right away during labor, and it can reduce the rate of infection in children to about 10%. Okay, so at that time ये drug को IV intravenously भी दे सकते हैं. Okay, and babies में
The babies who are born to infected mothers start receiving ART within 6 to 12 hours after birth. Okay, and one or this antiretroviral drug will be continued till 6 weeks after birth. Okay, उसके बाद WHO ने कुछ गाइडलाइंस दिया. PMTCT क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन गाइडलाइन. इस गाइडलाइंस में WHO क्या बोलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम एंड डिलीवरी के टाइम में प्रेग्नेंट वुमेंस को ध्यान देना है कि वो कंप्लीट अपना ART ट्रीटमेंट ले. दैट इज़ लाइफ लॉन्ग ART ट्रीटमेंट चलना चाहिए इन मदर्स में जो HIV पॉजिटिव है. Okay, especially during pregnancy, breastfeeding. Okay, so that precaution they need to take. Then कुछ prevention guidelines है. As we all know that there is no vaccine available for HIV. So इसमें mother को देखना है कि they are taking ART when they want to become pregnant, and when pregnant take HIV infection the right way every day throughout pregnancy, labor and delivery. Prefer cesarean section. अगर vaginal है तो it should be done under certain precaution. After delivery, ensure that the baby is also taking HIV medicine. They have to completely avoid breastfeeding because 10 से 20% chance उसमें भी है. And they should avoid pre-chewing food for an infant toddler. Okay, so that precaution they need to take. क्योंकि ऐसा कोई वैक्सीन है नहीं तो प्रिवेंशन जितना हो सके उतना वो लोग को लेना है. ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है कि HIV पॉजिटिव मदर? दैट इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क. बिकॉज हम ये देखते हैं अगर हो सके बच्चे को अगर फॉर्मूला फीडिंग मदर दे पा रही है एंड दे आर फुलफिलिंग अ फास्ट क्राइटेरिया. फास्ट क्राइटेरिया मीन्स it is affordable for them. Formula feeding is affordable for them, feasible, acceptable in their family, sustainable. That means they can continue it till 6 months and they are preparing it in a safe form, hygienically, surrounding वगैरह सब कुछ safe है. Then we can recommend them for the formula feeding. लेकिन अगर बहुत ही poor background से they cannot afford it, so what recommendation we give? To give breastfeeding only, because certain studies shows that बच्चे malnutrition से ज़्यादा death rate है compared to HIV infection. So we already all give them the option कि वो लोग क्या decide करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए. ठीक है. So that's all about this care of newborn of HIV पॉजिटिव मदर. इसमें हमको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि कब कब ट्रांसमिशन होने के चांसेस है, कितना % चांसेस है, और उसमें कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं. सो वी विल रिकमेंड द प्रेग्नेंट वुमेन टू टेक ART थेरेपी थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस ऑल्सो. कॉम्बिनेशन ड्रग, ज़ीरोवुडिन का कॉम्बिनेशन ड्रग यूज़ होता है इसमें और वो इफ़ेक्टिव है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फेक्शन. ओके, कभी भी मदर को मिक्स्ड फीडिंग नहीं देना चाहिए. मतलब कभी ब्रेस्ट फीडिंग दे दिया, कभी फॉर्मूला फीडिंग दे दिया, ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करना है. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला फीडिंग देने से GI ट्रैक में एब्रेशन होते हैं, उसके वजह से बाद में अगर वो ब्रेस्ट फीड कराएगी तो वायरस ईजिली एंट्री हो, तो वो अवॉइड करने बोलना है. रेस्ट आई थिंक इट्स क्लियर.